नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग आभूषणों को, यानी कि अलग अलग ज्वेलरी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में। झुमका, इयररिंग, EARRING, इयररिंग, झुमका, इयररिंग, EARRING, earring. I purchased a new pair of earring yesterday. I purchased a new pair of earring yesterday. Anguthi, ring, RING, ring. Anguthi, ring, RING, ring. Oh, it's an expensive ring. Oh, it's an expensive ring. Har, necklace, NECKLACE, necklace. Har, necklace, NECKLACE, necklace. Oh my God, what a pretty necklace. Oh my God, what a pretty necklace. Chudi, bangle, BANGLE, bangle. Chudi, bangle, BANGLE, bangle. I have 12 bangles at my home. I have 12 bangles at my home. Pile, anklet, ANKLET, anklet. Pile, anklet, ANKLET, anklet. I really want to buy this anklet. I really want to buy this anklet. So today we have learned Jhumka means earring. Anguthi means ring. Har means necklace. Bangle means chudi. And anklet means pile. आज से हम सब इन्हीं इंग्लिश वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे डेली। हम रोजाना सीख रहे हैं इंग्लिश को, लेकिन हिंदी में। जी हाँ, इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं, जो समझाते हैं, वो हिंदी में समझाते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं इंग्लिश, ताकि इंग्लिश हमारी जिंदगी में सक्सेस में, सफलता में कभी रोड़ा ना बन सके। प्लीज हमारे बताए वर्ड्स को रोजाना प्रैक्टिस करें, रोजाना उनका अभ्यास करें, ताकि आपकी इन पर पकड़ बने और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, और धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स टू इंग्लिश सेंटेंसेस। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू सबकी शिक्षा।